So welcome to this another session. Welcome to this another session of Mahiyatul Amraz, that is Unani pathology. In this session, we will see the some introductory aspect of Unani pathology and some basic classifications. माहितुल अमराज़ के एक इब्तदाई तारुफ़ के बाद हम इसमें कुछ मज़ीद बुनियादी चीज़ें देखेंगे। हम अहवाल बदन का हमने तज़किरा किया था और अहवाल बदन के तफ़सीली तारुफ़ के बाद अब इसमें जो मज़ीद अमराज़ की तक़सीम की गई हैं और अमराज़ को मुख्तलिफ़ एतबार से समझाया गया है, उस पर बात की जाएगी। अमराज़ की एक तक़सीम इस एतबार से की गई है कि अमराज़ ज़ाहिरा भी हो सकते हैं और अमराज़ बातिना भी हो सकते हैं। तो अमराज़ ज़ाहिरा क्या हैं और अमराज़ बातिना क्या हैं? तो वो अमराज़, वो बैरूनी अमराज़ जो ज़ाहिरी तौर से नज़र आते हैं, हम उनको अमराज़ ज़ाहिरा कहते हैं। तो ऐसे बैरूनी अमराज़ जिनको ज़ाहिरी तौर से हम देख सकते हैं, उसे हम अमराज़ ज़ाहिरा कहते हैं। उसकी मिसाल यहाँ देख सकते हैं आप कि औराम व बसूर के बॉडी पर जो रैशेस डेवलप हो जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्वेलिंग्स पैदा हो जाती हैं, मुख्तलिफ़ स्वेलिंग्स पैदा हो जाती हैं बॉडी पर। तो इस तरह की जो स्वेलिंग्स हैं हम उसको औराम कहते हैं और इसकी तफसील आगे आएंगी। इसी तरह वो अमराज़ जो अंदरूनी तौर से बातिनी आज़ा में लाहक़ होते हैं और उनका अंदाज़ा हम ज़ाहिरी तौर पर देख कर नहीं लगा सकते, बल्कि उनका अंदाज़ा या तो क़यास से लगाया जाता है कि हम अपने क़ुव्वत क़यास से और अपनी जो क्लिनिकल जजमेंट है उसके ज़रिए से हम अंदाज़ा करते हैं कि कौन सा मर्ज़ इस शख्स को हुआ है, या फिर उन अलामतों से जो मरीज़ लेकर आता है। मरीज़ अलामतें लेकर आ रहा है, मसलन पेट में दर्द की एक शिकायत है जो पेट के दाहिने तरफ है, और उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी नौइयत और उसकी दीगर तफासील से कि इस शख्स को जिगर का मर्ज़ लाहक़ है। और फिर उसकी दीगर अलामतें, उसके यूरिन में जो चेंजेस हैं, उसके चेहरे पे जो, उसकी स्किन पे जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं और जो दूसरे मैनिफेस्टेशंस उस पर्टिकुलर डिसीज़ के होते हैं, हम उनसे अंदाज़ा लगाते हैं। बराह रास्त हम जिगर के उस मर्ज़ को नहीं देख पाते। तो जब ऐसे कंडीशन होती है तो हम अमराज़ बातिना कहते हैं, और ऐसी चीज़ें जिसको ज़ाहिरी तौर पर हम देख लेते हैं हम उनको अमराज़ ज़ाहिरा कहते हैं। तो अमराज़ ज़ाहिरा की तशख़ीस आसान है, अमराज़ ज़ाहिरा को समझना आसान है और उसकी माहियत का बयान करना आसान है, लेकिन अमराज़ बातिना का डायग्नोस करना ये मुश्किल है। और इसके लिए अतिब्बा ने मुख्तलिफ़ उसूल दिए हैं, ऐसे उसूल जो नेचुरल हैं और जिसका हम अपनी क़ुव्वत इदराक का इस्तेमाल करके और क्लिनिकल जजमेंट का इस्तेमाल करके हम उसको समझ सकते हैं। तो उन उसूलों को हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे अमराज़ बातिना की अलामात क्या होती हैं, ये इल्म अलामात में बयान किया जाएगा, और कैसे हम बातिन के अमराज़ को जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं उसको देख सकते हैं। ये आजकल की जदीद इन्वेस्टिगेशंस के ज़रिए से इनका अंदाज़ा लगाना और एक्यूरेटली प्रिसाइजली मालूम करना ज़रूर आसान हो गया है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर हमारे पास ये मीन्स मौजूद नहीं हैं, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे टेक्निक्स या इन्वेस्टिगेशंस के जो दीगर तरीक़े इस वक्त राइज हैं वो मौजूद नहीं हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, ऐसी सूरत में हम कैसे क्लिनिकली विदाउट यूजिंग एनी इन्वेस्टिगेशन टूल हम कैसे उनको डायग्नोस कर लेंगे, इसका तज़किरा अमराज़ बातिना की अलामत में आएगा। इसलिए इस ज़रूरत के तहत अमराज़ ज़ाहिरा और बातिना की तक़सीम की गई है। So after the detailed introduction of ilmul ahwal, we are now considering different classification systems
which are mentioned in Unani medicine. So first one is Amraz Zahira and Batina, the diseases which are internal and external, internal diseases and external diseases. So what are Amraz Zahira or external diseases? Amraz Zahira is actually external diseases, Amraz Batina is internal disease. So what is Amraz Zahira? These are diseases which appear externally in the external organs, for example skin and appendages like auram or busur, or we can call it as rashes or pustules, or we can say for example boil. These are all are, for example acne. These all are examples of amraze zahira. Similarly, swellings, for example any inflammation externally, inflammatory swelling, for example in knee joint. So these are called as external disease. Why it is external and why it is classified? Because diagnosing this disease is very simple. We just see, we palpate, we can feel that particular lesion, and we can diagnose. It is a case of swelling, and which type of swelling, it is hot swelling or cold swelling, and what may be the matter. We are externally observing all these things. So diagnosing the exact cause, exact etiology with the help of apparent manifestations is easy. But in amraz batena, in internal diseases, it is little bit difficult to diagnose the cases. These are diseases which occur in internal organs such as abdomen, and could not be seen externally, but it can be diagnosed. There are certain principles of diagnosis and the certain clues with the help of which we can diagnose. These are clinical manifestations and clinical judgment. Certain manifestations appear for that particular internal disease, with the help of which we can diagnose what is the case and what is the actual problem. For example, in liver diseases, a very classical example is jaundice. So jaundice, in case of jaundice, or either it may be obstructive or medical jaundice. So in case of jaundice, we can see the yellowish discoloration of skin and sclera, yellowish discoloration of eyes, and the patient also presents with certain manifestations, for example pain in the abdomen, the right side, and patient may present with loss of appetite and certain other nausea, vomiting sensations, etc., based on the actual cause of jaundice. So with the help of these manifestations which patients present, and physician can examine, and based on our clinical judgment, our previous information about these diseases, we can diagnose this internal disease. So there are clear cut guidelines for diagnosing such diseases which cannot be seen externally, which cannot be easily diagnosed. The exact disease could not be seen, exact organ we we could not see the exact organ with that pathology. So we are, with the help of clinical manifestation and our previous information, we can judge what is the clinical diagnosis of this disease. With the help of today's investigations like ultrasound, X-ray, and everything, it is very now easy to diagnose the patients with the help of these investigations precisely what is the pathology. But there may be chance of there are chances of errors in the diagnosis.
So it is always written on all these investigations, please correlate clinically. So clinical judgment is very important, and in remote areas where these facilities are not available, in such conditions, we need those guidelines for diagnosing these diseases, and these will be discussed in Ilmul Alamat. So that's why Amraz are classified logically as external diseases and internal diseases. So the approach to both diseases are different.